ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ APS, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ OCI ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਗੈਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ APS ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹਨ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ APS ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ। So my name is Harry Singh Bola, and I'm the president and CEO of Bola Oil Corp. We're here gathered together in Pearl, in Hicksville, New York, and a camp of Indian ambassador. They brought the team of the peoples that will be helping people to obtain passports or any other legal document they might need to go back home. They go to India. It's been a great event. People have been super helpful. We have hundreds of people that lined up, have registered for this event. One message I want to give to everybody in the community: you do not need to pay anyone any money to obtain your passport. Reach out to the consulate's office. They will guide you through. We will provide you more information, and through the TV medias where people can reach and find the way to file an application, meet up with the people at the consulate's office, so they do not pay for passport. They have their birthrights. Please make sure that you are out there and not paying people money that you don't need to pay. Our Binay Pradhan, our ambassador ji, an amazing open arm type of guy. He's someone who's willing to reach out to anyone that need help, so don't shy away. The older days of 30-40 years ago where people were afraid to go to the general consulate's office not expecting any help, but you can go there now and seek help, and they will come forward volunteer basis to help you. Please reach out to everyone. Okay, thank you. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਪੂਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਔਨ ਯੋਰ ਡੋਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਆਪਣਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। VSF ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ embassy is on your door at Pearl Banquet Hall on the request of the American Punjabi Society. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, OCI ਦੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਕਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, 9172084027 ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So today we are gathered together in a Pearl restaurant in Hicksville. So it's a counselor camp is conducted by APS and all other organizations. So which is a big thing for and helping the community over here. So I credit goes to Gary Sikka and their team. So which they conduct a counselor camp like this, and New York Consulate under the leadership of our Consulate General Vinay Pradhan ji, who's a very humble and down to earth CG ever New York Consulate ever had. So he given a opportunity for the consular camp in Hicksville. So people have problems, they are coming over here, they don't have to go to the consulate, and they are coming over saving time, and consulate is at your door. So this is the mission of New York Consulate over here. So we are happy that these kind of camps helping the community, and they are getting all the information what they need, and also the problem is solved over here. They don't have to go to the city. Thank you Gary Sikka ji and their team for APS conducting these kind of camps. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਿਕ। ਭਰਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਵਰ APS ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਨੋ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਹੋਏ। We are very thankful to our Consulate General Vinay Pradhan ji. He did such a marvelous job to solve the problem all these people, visa problem, passport problem, OCI problem, and they did the first time camp in Long Island. I really appreciate Gary Sikka ji and Vinay Pradhan ji. Thank you very much. I feel everybody is saying so much, and which is a great thing is happening at Pearl. And most importantly, I like to congratulate and thank you Gary Sikka, who and his team who organize these kind of things every year, every time. And thanks to Pradhan ji to come here and Members of the community, really grateful, thankful that everyone is here to make this camp a success. From the consulate side, I look after community affairs, so I would like to take this opportunity to tell you a little bit about what the community affairs team does. Apart from the consular services that the consular services team does, the issues of passport, visa, and everything.
From our community affairs side, we have been providing a lot of services to the community, including in cases of death and in case of emergencies. We have a service through the Indian Community Welfare Fund, and we use this fund to help community members when there is a death of an Indian citizen and his bodies or the ashes have to be transported to India, and in case of needy persons we do that. Apart from that, we use the Indian Community Welfare Fund to help a lot of women who are in case of need, in case of domestic violence, in case of abandoned by their spouses, and in these such cases we are able to help the community. Apart from that, the consular service that we are providing and the work that we are doing from the consular side, I would like to invite our consul for consular passport and visa, Shruti Pandey, to the stage, please. If I can ask everyone in this room, please. Everyone on the left. Everyone on the left, please. You hear me? Hello? The one thing we're missing in our community is a patient. And one thing we're missing in the community is something respect. And I kind of feel very disrespectful that we have very important people here with us. President Consulate's office, Ambassador himself, and his team trying to help the community. But yet we cannot be quiet. We all professionals here. And I really truly appreciate that people in the desk here, the helping people, please keep your voice down. Let everybody hear what the speakers as they say and make a good statement. I thank you so much. Please come. यहाँ पे बैठे सभी कम्युनिटी लीडर्स को मेरा नमस्कार, सारे प्रेजेंट इंडियन कम्युनिटी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हमारा ये काउंसिल कैंप, हमारी जो कोशिश रहती है कि लोगों को डोर स्टेप पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसी कोशिश का एक हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में हमने जितने कैंप्स किए हैं उनमें से ये सबसे बड़ा काउंसलर कैंप है। हमारी सबसे बड़ी टीम यहाँ पे आज उपस्थित है आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वीज़ा हो, अटेस्टेशन हो, OCI हो, हमारी टीम यहाँ पे है। आपको कोई भी अगर डाउट या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स के को लेके अगर कोई भी सवाल हो तो उन सब के सवाल आज हम देने के लिए, जवाब हम देने के लिए यहाँ पे हैं। इस काउंसलर कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए APS, राणा और प्रबुद्ध का हार्दिक धन्यवाद। ये वेन्यू प्रोवाइड करने के लिए गैरी सिक्का जी का हार्दिक धन्यवाद, और जो वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पे हमारी हेल्प कर रही है उन सब का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Now I would like to invite Consul General here in New York, Ambassador Vinay Pradhan, to the stage, please. APS के फाउंडर मिस्टर हैरी सिंह गोला, APS के प्रेसिडेंट मिस्टर गैरी सिक्का, राणा के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेम भंडारी। भंडारी साहब आप कहाँ हैं? अच्छा, मिस्टर प्रेम भंडारी एंड हमारे बृहद लीवर के मिस्टर पटेल एंड ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, लीडर्स ऑफ APS। Sincere thanks for organizing this event along with the consulate. ये करीब 26 जनवरी के टाइम, आई रिमेंबर वी आर हैविंग a reception. That is the time when Mr. Gary Sikka, Mr. Harry Gola, Mr. Prem Bhandari, they all discussed with me that why can't we do a consular camp in Long Island. And my instinctive response was that it's only 45 minutes from the consulate. Do we really need to do a consular camp here? But then as time passed, we realized that let's do it here and let's bring that
confidence to the community that the consulate is here to serve the Indian diaspora, and it's our duty once in a while to come to the doorstep of the community, and that's the I would say objective for which we are here. So today I am here, my head of the consular wing, Shruti is here, head of the community affairs, Sevang is here, our colleagues from the outsourced agency VFS, they are here processing the papers. So put together we have 13 people from the Indian consulate who are here today. And while we are providing you services here, the Indian consulate is also open because this consulate remains open on Saturdays and Sundays from 12 to 10 to 12, and the consulate is also functioning in the New York City. Now, the limited point I have to make here, my colleagues told you about different initiatives that the government has brought, but may आपको एक I want to convey two points. मैं यहाँ 2.5 साल बिता चुका हूँ. I keep receiving lot of emails, I keep meeting lot of people. I also come across different suggestions, different challenges. We as a consulate, we try to accommodate them. I remember when we were new, we received complaint about OCI portal, that when you upload your photograph, it would not be smooth. 3 months back, the OCI portal has been updated. Now the OCI portal is working smoothly. We received suggestions that people find problem in certain issues in terms of documentation. We have tried to streamline them. So the effort of me, my consular team, is to provide a smooth service within the bounds of the law. But coming to, let me give you a glimpse of the one problem that I face. Very often I come across certificates, documents which are issued from this region in Long Island, which turn out to be fake certificates. Like somebody came to us with a complaint that I got a power of attorney from you. I paid $500 for the power of attorney, and when I sent it to India, that power of attorney is not being accepted because you as a consulate, you are saying that is not issued by you. So we checked that and we found that we never issued that power of attorney. While they got the stamp of Shruti, they put that stamp, somebody made a fake stamp, they issued that. So the agent who did issue that power of attorney never even bothered to come to the consulate to get it issued, while the agent charged $500. And to give you a real estimate, the charge that we charge for attestation is $12. So imagine something which costs $12 in the consulate is being charged with $500, and on the top of that, that's a fake certificate. So if you want to see the services that we provide, whether we provide a passport, which generally costs $127, that's the cost of passport. Now, I personally believe, and that's the spirit with which we are working, that anybody who has come from India and is not having an American passport, if you are an Indian citizen, it's your right to have an Indian passport. And it's my duty as a consulate to provide you an Indian passport. The only thing between you and me is you coming to me with documents and to say that I'm an Indian passport holder, I need a reissue of passport. My job, my team's job is to get it verified from India that your passport we can issue, and we issue the passport. If you have any document to show that you are legally staying in this country, we provide you a 10 years passport. If you have some documentation which are in the process, then we provide a short-term passport. But in any case, you have a right for Indian passport, and that is our job to provide you Indian passport. Under no circumstances you should go to third parties and try to do things which are unethical. And because that is going to put you in trouble, and that is something which is not going to help you to get a passport. And if you come to the consulate directly, rather it's going to be helpful. The other thing I want to say, last year we changed the agreement that we have signed with VFS. VFS, as you know, is the visa providing service which process the papers. Now, as per the new agreement, while they charge $19 to provide any service that you charge, that you take, the responsibility of VFS includes to fill up your application form. So if you are having challenge in filling up application form, suppose आप हिंदी में भरना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप हिंदी बोलते हैं, प्लीज कम टू VFS सेंटर. वो उनका जो $19 आपसे लेते हैं, उसमें उनका जिम्मेदारी है कि आपका फोटो भी खींच के 4 फोटो दें. उसमें उनका जिम्मेदारी है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करें अगर आप लेना भूल गए हैं, और उनका जिम्मेदारी है कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन, OCI एप्लीकेशन वो भरें. ये जिम्मेदारी उनका है और आपका राइट है, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दैट $19 विच इंक्लूड्स दीज राइट्स. सो मेरा पॉइंट है कि आपको कोई भी वजह नहीं है कि आप किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम उठाएं. आप कॉन्सुलेट में आइए, कॉन्सुलेट का VFS सेंटर में जाइए. आज हमारे सारे लोग आए हैं, आप सबसे जान पहचान बना सकते हैं. माई रिक्वेस्ट इज दैट स्प्रेड दिस मैसेज टू द कम्युनिटी that the consulate is there to serve you. That's the reason 13 of us are here today. That is what I requested Mr. Hari Singh Bola. That's what I requested Mr. Prem Bhandari. That's what I requested Mr. Gary Sikka. That let's spread this message.
in the community, and I request the APS members and other friends here to spread this message to everybody that if you have come from India, you need an Indian passport, that's your right. And it's our job to find a way that you get a passport. Like I said, if you have all documents, we'll give a 10-year passport, and we provide it rather, I think, within 7-8 days we provide a passport. So there is no reason why people should go to unethical people who are extorting money from you. And the other thing I would also say that these days you find a scam going on. People are getting calls in the name of consulate. People are getting calls that you need to provide some document, need to provide some personal information. Please remember that the consulate or embassy or any consulate of India, we are not in the business of calling people and asking for personal information. So don't entertain such calls, rather complain. We have put those details in social media. I'll conclude by saying that the reason of doing this consular camp, only 45 minutes from the consulate, is to give you that confidence that we mean it when we say that we are here to serve you. And please take it seriously, please trust us. If there is, as you know, we are working very closely with APS, we are very closely working with Rana, we are closely working with Bruhat New York and Jaipur Food. All the members, their volunteers are also here. You have any issue in terms of reaching out to us, even though my colleagues are here, you can reach out to us through the community leaders. But you should have a trust that between you and between the consulate, there is no third person. If you want to come to us directly, that is the best way, that is the most direct way, we would welcome that. Thank you. Invite patron APS Shri Harrison Bola. I'm going to get back to those friends in back. I think it would be great, a few more minutes left to finish people speaking. If we can shut down those tables for 10 minutes, could you please ask them if they can just not service the next 10 minutes? So everybody get to hear everyone else. We have a couple more important people here to talk about it. I'm standing here just thanking Ambassador Vinay Pradhan, who I came to know just about T21, T20 World Cups, as we came to know each other and understanding their interest here to help all of us. Going back 43 years, going to General Council of India, there's always a question mark, are you going to get help or are you going to get pushed around? And many of the families come from my region of Punjabs, and many of the people need the services and the passports. They were never simple enough to go apply for a new passport or renew a new passport and able to get it done without finding the way to get somebody to help you. Because those situations, as some of the people, some of the character in our community have taken advantage of those innocent peoples that does not know enough about it, how to obtain the passport, how to renew passports, or somebody lost a passport, for example, they came here 30 years ago in means of doing different ways, might not have migrated here illegally, but they're so afraid if they have a passport to renew, if they go to the consulate, they'll come to know they don't have the legal documents here. My recent experience with the consulate has been amazing. They have helped people, and they didn't even have the right or green cards, but find a way to get legal documents in a place by identifying identity of those people from India, by identifying the identity of the people that have actual original passport from India. As long as you can approve yourself and the person who's trying to obtain a passport is actually come from India, there's an identity that could be provided to the consulate, and they are very helpful after that application to help you present documents that could give them the basis to issue a passport. They can't just give somebody a passport because they know someone. I wouldn't call Ambassador Vinay and say, look, I have a family friends need a passport, issue my passport. They still have to do their due diligence. They still have to go through a legal process. They still are answering to a government of India. Their duties need to be understood, but we should not be fair. We should not fear to go to them directly. And I know many people in our community have taken advantage, charging thousands and thousands of dollars, either obtaining passport, obtaining visas, and other legal documents. This is the best time I know for 43 years that we have an open line communication
with the Regional Consulate's office. There's never been a times where people are not able to reach and get the proper answer or not getting the runaround. And I take this opportunity to please share with everyone, no matter what community you come from, whether you come from South India, North India, it doesn't matter what your last name is. You have to be able to go, able to obtain your documents. If you have legal identity as an ambassador from India, they can help you fill in the blanks. With the other document, they might need to make sure they are in legal compliance. Please come forward, take this approach, and I really wanted to thank you and bringing the whole team out here is so meaningful to us. We know what's the value of a passport. To many of Punjabis go through many problems when they come here, and it's not easy. They're often taken by people. So being honest, coming forward, sharing your access that you providing to the community is very appreciated, and we truly welcome you into the community again to come, and we'll welcome you to come to many other events. And I ask everyone, at the event like this, let's show some respect and be in discipline and listen to each other. Let somebody speak. Let's not worry about just eating, drinking, and chatting, because you could do all that in a few minutes. You can have fun talking with your friends. When you are here, when somebody's speaking up, please pay respect and pay close attention. You might get something out of it. All right, thanks for listening to me. I'll have a good night. Thank you, Mr. Harrison, patron APS, for always being a friend of the consulate and the community. Now I would like to invite the Rana President and Jaipur Food President Shri Prem Bhandari ji. Mr. Prem Bhandari has always been very helpful to the consulate and the community here. And good morning, everyone. Ambassador Pradhan Sahab, Voda Sahab, Gary Sikka Sahab, Ajay Patel Sahab, Rana Prahat, जयपुर फूड के पदाधिकारी, AIA नेशनल की प्रेसिडेंट, AIA न्यूयॉर्क चैप्टर की प्रेसिडेंट, आप ही के प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड हैं, अब तो आपने चार्ज ले लिया है, कृष्ण कुमार साहब। आज ये जो कॉन्सुलर कैंप यहाँ हो रहा है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। ये होना चाहिए कनेक्टिविटी में, ज़्यादा बेहतर है, दूर दराज इलाकों में होना चाहिए। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विनय प्रधान साहब कि आप इसे लॉन्ग आइलैंड में पहली बार जब से कॉन्सुलेट बना है न्यूयॉर्क का, ये पैदा करें, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप लोग प्रधान साहब के लिए इस बात को लेकर भी ताली बजा सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र कॉन्सुलेट है जो 365 दिन खुलता है। 365 दिन, चाहे बर्फ हो रही है, कितना भी विंटर हो, कुछ भी हो। 2-3 और कॉन्सुलेट हैं दुनिया में जो सिर्फ नाम के लिए खुलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फोन उठाता है, जैसे दुबई है। और मुझे ये भी खुशी है कि बोस्टन ने न्यूयॉर्क को देखकर ये शुरुआत की है कि वो भी 365 दिन अवेलेबल रहेंगे या अवेलेबल रहने लग गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस कैंप की यहाँ जरूरत नहीं थी, जरूरत एक बात की है। आप लोग कृपया अगर बोलेंगे तो मैं 1 ही मिनट में अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। सुनिए, जिस बात के लिए प्रधान साहब ने ये कैंप रखा है, उस बात को ध्यान से सुनिए। हम सब साधन संपन्न लोग हैं, कई समुदाय, हमारे बरादरी के लोग पासपोर्ट के लिए $5,000 से लेके $15,000 तक इन दलालों को देते हैं। सोचिए, एक टैक्सी चलाने वाला जो $15,000 देता है अपने पासपोर्ट के लिए, उसकी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है? आप और पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे, $500 तो गलत बता रहे हैं। मेरे सगे भाई ने $1,000 हिस्ट्री में एक दलाल को दिए। मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं कहा, मैं तो पूरी दुनिया के लिए करता हूँ, कहीं तो बिजी रहता है, इसलिए मैंने दे दिया $1,000। I think fees is $21 only.
आप देखें यहाँ कई संस्थाओं के हेड हैं। अगर आप वास्तव में इस कैंप को सफल करना चाहते हैं तो मैं एक 20 लोगों की कमेटी बनाऊंगा, उनके फ़ोन नंबर पूरी कम्युनिटी में घुमाऊंगा, लॉन्ग आइलैंड में नहीं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, चाहे न्यू जर्सी है, और संस्थाओं वालों को बोलूँगा आगे आओ, टाई सूट पहनना घूमना बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी के लिए काम आओ। यहाँ लोग बैठे होंगे जो मेरे घर आए होंगे और मैं उनके साथ में VFS गया हुआ हूँगा, मैं कॉन्सुलेट गया हूँगा, सिर्फ इसलिए मुझे मालूम है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा ये करीब $5,000 से फंस जाएगा, $10,000 से फंस जाएगा। रही बात VFS की, आप देखें बहुत वर्षों पहले एक VLS आया था, अब मैं CG साहब को वो डॉक्यूमेंटेशन भेजूंगा। एक ही मामले में मैं पीछे बढ़ा, 1 साल के अंदर VLS को यहाँ से भगा दिया न्यूयॉर्क से, और बाद में पूरे अमेरिका से उसका साफ हो गया। फिर एक CKTS आया, वो भी 6 साल तक रहा। जब गड़बड़ियाँ बहुत बढ़ी तो पीछे पड़ गया। VFS वाले मुझसे मिलके गए हैं, मैं इन्हें भी कह रहा हूँ कि प्रधान साहब के समय में ये ठीक काम कर रहे हैं, पर अभी भी आवश्यकता है अपने काम में सुधार लाने की। ये जितने अच्छे आज आपके यहाँ बिहेवियर कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रधान साहब बैठे हैं, उतना अच्छा बिहेवियर नहीं है इन लोगों का। मैं देख रहा हूँ सब लोग हाँ कर रहे हैं, थोड़ा जो इन्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। और मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि प्रधान साहब का कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले पहले या तो VFS ठीक हो जाएगा और नहीं तो VFS जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो फोटो ये रिजेक्ट करते हैं डाउनलोड करने में, आप जब $9 भर देते थे तो उसी फोटो को वापस अप्रूव कर देते हैं। ये कौन सा धंधा चल रहा है? कई लोग बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन पे $500 तक खर्च किए हैं इन लोगों के, इनके मीटर शुरू हो जाते हैं कोई सेकंड 5 मिनट के बाद में। इन्हें सुधार करना होगा। प्रधान साहब, आपके पहले यहाँ 3 ऐसे CG आए हैं, सबने अच्छा काम किया। ये कॉन्फ्रेंस एट डोर स्टेप जो शुरू हुआ था, ये 2014 में ज्ञानेश्वर फूले साहब ने शुरू किया। तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी ने ये कहा था कि ये प्रोग्राम पूरे अमेरिका में शुरू करना चाहिए, और वो अब तक चल रहा है। संजीव चक्रवर्ती जी आए, कोविड में बहुत अच्छा काम किया। जायसवाल साहब आए, जीरो पेंडेंसी का उन्होंने शुरू किया। पर इन सबसे बेहतरीन काम, तीनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं प्रधान साहब का दिल से, गाना की तरफ से, जयपुर बोर्ड की तरफ से, भारत न्यूयॉर्क की तरफ से, AIA का भी मैं फॉर्मल ट्रस्टी हूँ, मैं कह सकता हूँ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप पहले भी देश के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में आपने महती भूमिका निभाई थी। इसी वर्ष आपका कार्यकाल समाप्त होगा। मैं आपको इंडियन डायस्पोरा की तरफ से छोटी सी आवाज़ हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 बात और कहना चाह रहा हूँ कि मेरे टीम के लोग तो खैर रहेंगे, हम एक 20 नंबरों की लिस्ट जारी कर देंगे, उसके लिए $2,000-2,500 ले रहे हैं। आज यहाँ बैठी एक कांता बनी कि भाई मेरे सेपरेंट के लग के और $19 में वो भारत पहुँच जाए। मैं प्रधान साहब के बारे में एक बात और कहना चाह रहा हूँ। ये देखें आप, मॉर्टल रिमेन्स, जब किसी के शव को अगर परिवार खर्च नहीं दे सकता है तो उसके लिए आप और मेरे द्वारा ही जो पैसा इकट्ठा होता है उसे इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड करते हैं, जो पूरे दुनिया में हमसे लिया जाता है। सिएटल के अंदर एक बच्चे की डेथ हुई, 3 महीने बाद डेड बॉडी रिकवर हुई, उसे भारत भेजने का खर्चा भी प्रधान साहब ने, इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क ने ICWL फंड से किया। अभी हमारे एक सिख भाई किसी डेथ के अंदर लॉन्ग टर्म में गए थे, पूजा पाठ रात को किया, सुबह वो खुद ही निकल गए। 8,000 ये लोग खोलते हैं दुनिया के अंदर। मैं भी राजस्थानी कम्युनिटी से हूँ, गुजराती हूँ, पर सब हम पहले तो भारतीय ही हैं। आपको सिखों के मुकाबले में, सरदारों के मुकाबले में लंगर चलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और आज सीता साहब ने आपको पहले कल भी कहा था, मैं आप जहाँ कहोगे वहाँ $50,000 का जयपुर फूड का कैंप अपनी तरफ से करूँगा। आप मुझे जगह बताना, मैं अपनी तरफ से करूँगा। रही दूसरी बात, आप देखिए कि मैं इनके साथ पार्टनर नहीं होना चाह रहा था। सर आपको भी मैंने मना किया, यार आप APS वालों का आप ही लोग सब कुछ कर रहे हो, हमारे नाम हटा दो, मैं तो वैसे भी आऊँगा। क्योंकि प्रधान साहब से जब शुरुआती तौर में बात हुई थी तो गोला साहब भी थे, हम उस फंक्शन के अंदर, और कहा था कि आप आइए, मैंने कहा आप हमारा नाम हटाइए, मेरा भाषण भी हटाइए। इसलिए आप देखें मैं तैयारी करके नहीं आया, तो मैंने आपको मना किया था सीता साहब को, भाई आप लोगों का प्रोग्राम है, क्यों ज़बरदस्ती मुझे माइक पकड़ा रहे हो आप। पर चले, आप सबकी इच्छा थी तो मैंने, अच्छी जबान नहीं है मेरी, कड़वी ज़रूर है,
लेकिन हूँ मैं आप ही लोगों का। कोई काम पड़े आप याद कीजिए, मैं 24/7 आप लोगों के लिए तैयार हूँ। प्रधान साहब, एक बार आपका बहुत बहुत इंडियन कम्युनिटी की तरफ से आभार। जय हिंद। Thank you so much, Prem Madani. I would like to invite the President APS now, Mr. Gary Sikka. Ji, I think there is no need after such a nice speech. There is no any word to speak. Thank you very much for your time here today. And first of all, I am thankful to Ambassador Vinay Pradhan ji. Thank you to their team, Shruti Pandey ji, Mr. Swang, and all the team. I'm thankful to you today on such a short notice. We decided only 2 weeks back that we are doing this event. And on 26th of Republic Day event at Manhattan, Vinay Pradhan ji told us that I want to celebrate Vaisakhi with you, and we celebrated Vaisakhi at last year with the help of our chief patron Hari Singh Bola ji, with the Bruce Blakeman office last April, and that was celebrated along with the Consul General of India, and now today we are doing this event. I'm thankful to each and every person who came here, especially all the leaders from different associations. Mr. Ajay Patel ji, thank you very much for your time here today. Mr. Prahar ji, and API elected President Mr. Krishan Kumar ji. Congratulations to you for your new achievements, and you will be the next national president of API. Thankful to APS team, Mr. Varinder Sikka ji, Mr. Naran, and Mr. Tony ji. Thank you to APS Women Chair Navneet Sondhi and her team. Thankful to our Plainview Gurdwaras, Pradhan ji, Mr. Harbans Singh ji, and also from Asabai Mandir, Mr. Govind Bhatija ji, AIE President Nirma ji, and most prominent person of our team, APS team. Because my number was there on that flyer, so everybody was calling me for this event. So I was passing it to Pradeep Tandon ji. So I'm thankful to Pradeep ji. He was always there for he's our APS main person to reply each and every question. So many calls, I think we received more than 200 calls. And especially thank you our chief patron, Mr. Hari Singh Bola. He always there for guiding us all the time. And I'm thankful to Mr. Dr. Kothari. Thank you very much. Veena Kothari, thank you very much. I saw Mr. Munjal also here. Thank you too. So if I forget some names, please forgive me. Thankful to each and every person who came here on a short notice, and these kind of events we will be doing in future also. I had, as Mr. Bandari told, that we had never seen this kind of ambassador we are here for last 30-40 years. So I'm saying I'm connected with the CG office from a long time, but this CG I had never seen working day and night and available for each and every person. Thank you, sir. Thank you very much for your time here today. And thank you for each and every person who came today. Thank you. Thank you. Mr. Ajay Patel from Bhuvat, New York CBS. Everybody, on behalf of my entire APS team, my entire council, I would like to thank the entire
committee, the entire council, all our volunteers who woke up early in the morning and help us to make this camp successful. This was not possible without you all being here. We have unbelievable response here. These kids, young youth has been here helping people register, fill up the applications, and ensure that this whole process is carried out smoothly. So thank you very much, and thank you, Mr. Gary Sika. Thank you for giving us this opportunity in bringing the Indian Embassy. That is actually unbelievable, happened for the first time. The Indian Embassy is here in Long Island, where anything that we needed, whether you wanted to renew your passport, wanted to get the OCI card done, or anything related to Indian power of attorney, everything is being taken care here before you leave. If your applications, everything's are completed, you have full documents, you walk out with the same. So thank you. Cheers, 3 cheers to Gary Sika for taking care of this. And thank you to the entire team, to all my volunteers and my entire Women Council who made sure in a short duration, short notice, they all are here. So thank you, everybody.